Moving on towards your 6B part number 3 and the very last part of your capacitance, which is the capacitor mathematics. We are going to use some of the equations for exponential discharge in a capacitor resistor circuit. ये आपने already video में भी देखा था that how do we use the exponent and all. Then we are going to derive and use capacitor discharge equation in terms of current and voltage and the corresponding logarithm equations as well. Discharging capacitor maths, we have seen that the charging and discharging of a capacitor follows curving paths in which the current is constantly changing. It also follows that the rate of charge and the potential difference are also constantly changing. We call these the exponential curves कि किस तरह से with time आपके पास voltage भी change हो रहा है, आपके पास time भी change हो रहा है, and the capacitance and the charge, they're all changing with time. We have seen those exponential curves as well, that how quickly they all discharge. So the shapes can be produced by plotting a mathematical formula which have the power functions in term. In the case of discharging a capacitor, the R, the function that describe the charge remaining on the capacitor will be Q. तो वहां के लिए आप कौन सी यूज करोगे? You can start noting down these as well. Q is equal to Q naught exponential minus T divided by resistance into capacitor. जहां भी आ जाए ये नॉट, ये जो नॉट वाला साइन है, दिस नॉट विल ऑलवेज मीन व्हाट? इनिशियल. हर जगह दिस नॉट इज ओनली गोइंग टू टेल यू कि इट इज एक्चुअली द इनिशियल वन, और ये वाला जो चार्ज है, दिस इज द न्यू चार्ज. ये द वन दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्चुअली. फॉर एग्जाम्पल, capacitance is given to you, voltage is given to you, 900 is the resistance, 20 seconds आपको time दिया हुआ, you have to put in the value. You can see that this was the capacitance before, exponential of time minus 20 seconds divided by 900 into 0.03, और वो exponent आपको obviously remove करना आता है. You can use the natural log method as well, and then you will calculate your new charge. Same is the case with voltage as well. For voltage we can use another equation which is, now ये भी note down कर लें, V is equal to V naught exponent minus T over RC. The potential difference across a discharging capacitor will fall as the charge stored fallen. By substituting the equation Q is equal to CV into our exponential decay equation, we can show that the formula that describes voltage on a discharging capacitor is in exactly the same form as for the charge itself. और कोई भी फर्क नहीं है आपके पास. The same thing is given over here. You are given the capacitor, you are given the voltage, you are given the resistance, एंड यू आर गिवन द टाइम. तो ये आपके पास अब देखो सारी चीज़ें आती जाएंगी. दिस इज योर कैपेसिटेंस, ये आपके पास क्या है? दिस इज योर वी नॉट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर टाइम, एंड व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जस्ट वी. सेम इज द केस एज वी सॉ, करंट ऑल्सो चेंजेस. हर चीज़ चेंज हो रही है विद टाइम. अगर डिस्चार्जिंग हो रही है, वोल्टेज, चार्ज, करंट, दे आर ऑल गोइंग टू डिक्रीज. सो द थर्ड इक्वेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर इज आई इज इक्वल टू I naught exponent of minus t over RC. Again, you will be given the capacitance, the voltage, the time, and then you are given 900 ohm. You have to put in the values. अब आपको यहाँ पे एक मसला है. You are given voltage and you are given resistance. निकालना आपने क्या है? The time. हमारे पास इनिशियल आपने निकालना क्या है? करंट. But do you have I naught? You don't have I naught. So for that you will have to carry out an extra step by using the Ohm's law that says V is equal to IR. अगर आप देखो आपको V naught given है, आप I naught निकाल सकते हो. Once you calculate I naught, yes, then the remaining step is all clear. उस तरह से फिर से सब कुछ आपको डाटा दिया हुआ है. So sometimes I naught might not be given to you directly in the question as well. The mathematics used here includes some calculus including integration as well, बट इतनी ज़्यादा नहीं है एडवांस. मुझे तो ज़्यादा मैथ्स का आइडिया नहीं है, बट हाउएवर फॉर दोज स्टडिंग हाई लेवल मैथमेटिक्स दे कैन इजीली एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ द कैपेसिटी इक्वेशंस. आप भी मेरे से बेहतर बता सकते हो दैट हाउ यू कैन यूज़ द नेचुरल लॉग, या वो डेरिवेटिव्स अगर आपने यूज़ करने हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करनी है, तो बाय लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम से यू कैन कन्वर्ट दैट एक्सपोनेंट बाय टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम. हम उसको ख़त्म कर देते हैं. इस दिस ऑल क्लियर? आपको यूज़ करना आता है ऑन द कैलकुलेटर? जस्ट लेट मी नो. और आप इन सारी इक्वेशंस को डायरेक्ट अगर आप लॉगरिथम फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लो, वरना यही डायरेक्ट याद रख लें. यू कैन ईजिली कन्वर्ट इट लेटर ऑन एज वेल. यू हैव टू रिमेंबर दीज ओनली, द वंस आई हैव रिटन अबव. इज एवरीथिंग क्लियर? अच्छा, लॉग नहीं स्टार्ट किया, मैं आपको बता देता हूँ. जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, व्हेन यू हैव टू रिमूव एक्सपोनेंट, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जब आपने एक्सपोनेंट रिमूव करना होता है ना बेसिकली, तो यू यूज़ नेचुरल लॉग. ओके, यू जस्ट यूज़ अ नेचुरल लॉग. फॉर एग्जांपल, ये वाला है जो आपको कॉमन लॉगरिथम इक्वेशंस याद रखनी है फॉर वोल्टेज. तो आप डायरेक्ट भी देखो, v इज इक्वल टू वी नॉट एक्सपोनेंट माइनस टी आर सी था. एक्सपोनेंट को रिमूव करने का तरीका क्या है? यहाँ भी नेचुरल लॉग ले लो, यहाँ भी नेचुरल लॉग ले लो, तो देखो एक्सपोनेंट खत्म हो गया. ठीक है, पहले इक्वेशन क्या थी? v
इज इक्वल टू वी नॉट एक्सपोनेंट माइनस टी ओवर आर सी। अब एक्सपोनेंट खत्म करना है तो आपके पास अब नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो, एल एन वी इज इक्वल टू एल एन वी नॉट, एक्सपोनेंट खत्म हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो अब किससे, एक्सपोनेंट खत्म, माइनस टी ओवर आर सी प्रॉपर होल फ्रैक्शंस में आ गए। इज दिस स्टेप क्लियर? ये बहुत है, लॉगरिथम से सॉल्व करते हैं वी डोंट नीड द इंटीग्रेशन पार्ट एज वेल, दोनों अलाउड होते हैं आपके पेपर के अंदर। सेम इज द केस यू कैन यूज विद करंट एज वेल। अगर करंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो यू कैन मेक द लॉगरिथम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सिर्फ वी भी, वी की जगह आई आर भी लिख सकते हो, और आप अगर आई निकले तो वी ओवर आर भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स एज वेल। So this is the equation for current. You can directly memorize the logarithm equations as well. The 30%, the 37% life का क्या मतलब होता है? If we consider the charge at time t, तो you can also calculate कि अगर आपको पूरा logarithm function यूज नहीं करना, याद रखें एक 37% रूल होता है जो हर दफ़ा काम नहीं करता, but I'll show you where it works, that if you want to find the new charge, you can just calculate 37% of the initial charge, मतलब कि you can multiply the initial charge with what, 0.37, and इसकी कुछ वो होंगी conditions होंगी, because this equation shows that the time constant describe the decay of charge on a discharging capacitor is exactly the same way as a radioactive half life as well। वहाँ radioactive half life भी जो आप study करते हो, that's where also you can find the remaining radioactive nuclei as well, except instead of describing the time taken to reach half of the initial value, तो आप सिंपल 37% निकालो, दैट कैन ऑल्सो गिव यू द आंसर, बट हम दोनों तरीके करेंगे टू रीचेक आवर आंसर एज वेल। ये होती है ना वो डिके में, अगर आप वो फाइंड करते हो दैट व्हाट वाज द नंबर ऑफ अनडिकेड एज वेल, एंड अदर मैथमेटिकल फंक्शंस नहीं करने की जरूरत। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 6B।